Good evening, everyone. So we are back again with another new session on assertion and reason questions for 1 mark solution. And I'm here, Manisha Sharma from Today's School. The video link is right in front of you. And without wasting much of the time, let's start with the first assertion. The first session we are dealing with P block elements. हम इसका एक already session previously कर चुके हैं क्योंकि chapter बहुत बड़ा है, so we thought of dividing it into 2 sessions. So this is the session 2 for P block elements. Now in this session we are going to discuss halogens and noble gases. So halogens have characteristic color. Halogens readily accept electrons to form halide ion. Now here, halogens have characteristic color. This we all understand because we all know that bromine has a brown color, chlorine has a pale yellow color, iodine has violet color. So halogens have characteristic color. That's absolutely true. Halogens readily accept electrons to form halide ion. वो भी हमें पता है because X has 7 electrons in the outermost shell. As soon as you give 1 electron to it, it becomes stable and becomes X negative. That is why halogens are the most electronegative species that are known to us. So assertion is also true, reason is also true, but reason is not explaining the assertion well because color का electron acceptance से कोई relation नहीं है. Yes, हम ये कह सकते हैं कि halogens के पास unpaired electrons हैं जिसकी वजह से वो color emit कर रहा है. The electrons are jumping to the higher energy level, coming back to the ground level. During this time, they are emitting color. That all thing can be said and done, but वो सब लिखा नहीं है. So acceptance of electrons doesn't define the color, and that's why assertion is also true, reason is also true, but it is not explaining that. Second assertion that we have is fluorine shows only positive oxidation state. Now that's again very much true. That's because जो fluorine है वो highly electronegative species है. It is highly electronegative, and you know it's on the top also. So if we go by the series, is fluorine, chlorine, bromine, iodine. So that's why it is showing you -1 also, but it is showing you other than that also. So that is why we are accepting that. And reason here is that fluorine has an exceptional small size, which is not right, because yes, it has I'm sorry ये एक option यहाँ पर wrong जाएगा. I'm sorry. This the correct option to this should be D. The answer should be assertion is false and reason is true. ये typing थोड़ा सा error हमारे लिए हो गया है, so it should be D. That's because ये +1 दिखाता है, but ये only नहीं दिखाएगा. So यहाँ पर negative type होना चाहिए था. So it's only negative and it has exceptionally small size. तो इसलिए ये हमारा false होगा क्योंकि यहाँ negative नहीं है ना, ये positive है. So that's why this is आपका false and this is आपका true. So option यहाँ पर D आएगा and वो चीज हम करेक्ट कर रहे हैं. Now the third assertion that we have is chlorine water is a more permanent bleaching agent than sulfur dioxide. That's correct because yeah, again we have done it in class 11th and chlorine तो हमें सबको ही पता है. I don't know whether you understand it or not, but पुराने जमाने मतलब आज से करीब 15 साल पहले जब RO वगैरह नहीं थे तो we used to get those chlorine tablets. Just go and ask your parents, probably they will be able to tell you. Gवर्नमेंट हमें फ्री में chlorine water tablets देती थी और हम उन्हें अपने घड़े या जिस भी आप बॉटल्स वगैरह जहाँ भी आप वाटर स्टोर करते हो, ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ हम वो क्लोरीनेटेड टैबलेट्स डाला करते थे ताकि वो bleach कर दे. किसको bleach कर दे? The water impurities are supposed to be bleached. So yes, chlorine water is a very very good bleaching agent, and reason here is chlorine water oxidizes while sulfur dioxide reduces. That is also again true because chlorine की जो properties हैं उसकी वजह से chlorine जो है वो it undergoes oxidation, and that is why if you go to your labs and see chlorine water is stored in black bottles, dark colored bottles में हम उनको store करते हैं. So here assertion is also true, reason is also true, but and reason is explaining the correct, explaining the bleaching agent here also correctly. Now next we have is fluorine forms only one oxoacid, which is HOF. This is correct. Fluorine does not have d orbitals, which is also correct. So here assertion is also true, reason is also true, and reason is the correct explanation of assertion. So we go with the option A. Next we have is interhalogen compounds are better oxidizing agent than halogens. ये थोड़ा सा एक tricky concept आता है, उसको मैं आपको explain करना चाहूंगी. Like XX interhalogens हमारे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे आपका हो गया FCl, you can have ClBr, we also do have ClI, right? So we have all these compounds. These are called interhalogen compounds. They are very, very good oxidizing agents. And the reason is that XX bond are stronger than XX bonds. So if you are talking about interhalogen compounds, दोनों halogens आपके अलग अलग हैं, तो उनकी properties भी तो enhance करेंगी ना. और जो XX bonds है उसमें both the halogens are the same.
So that is why here assertion and reason both are true, but the reason is not explaining. यहाँ पर not आना चाहिए, option आपका B है, but यहाँ पर not type होना चाहिए. So I'll type from my side. Just a moment. Just a minute. Yeah, here it should be not. So assertion is also true, reason is also true, but they are not explaining क्योंकि oxidizing agent का bond strength से कोई relation नहीं है. So that is why not यहाँ पर आना चाहिए. Next we have the among the noble gases only xenon forms large number of compounds. That's absolutely correct, because xenon जो है वो अगर आप उसको atomic size के comparison में देखेंगे तो noble gases आता है वंस जिनको electrons की जरूरत नहीं है, full octet complete है, उनको electrons की जरूरत क्या है, but xenon जो है वो दूर हो जाता है. तो अगर ये मेरा nucleus है, shells हैं, तो xenon के इलेक्ट्रॉन्स काफी दूर है ना. सो इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू लॉस्ट, और यू नो जब वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंपाउंड्स भी फॉर्म हो जाएंगे. तो अभी तक तो इंटैक्ट था, तो इसलिए हम उसको रख कर बैठे हुए थे. तो असर्शन यहाँ आपका करेक्ट है, बट रीजन आपका यहाँ फॉल्स है, बिकॉज xenon की वो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, विच कैन नॉट बी सिमिलर टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, xenon यहाँ पर नोबल गैस है, उसके पास इट्स लाइक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ इसको समझाने के लिए. सपोज क्या होता है कि अभी आप अगर बच्चे हैं, स्टूडेंट है ना, तो आप लोग अपने मम्मी पापा के केयर में हैं, यू आर बीइंग यू नो केयर्ड फॉर. अब आप इमेजिन कीजिए एक 5 years का बच्चा, वो कैसा अपने मम्मी पापा उसके माँ बाप उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, यू नो दे आर ऑब्जर्विंग, बच्चा कहीं इधर तो नहीं जा रहा, कुछ मुंह में तो नहीं डाल रहा. आप लोगों पर भी पेरेंट्स की नजर होगी कि आप मोबाइल फोन ज्यादा यूज तो नहीं कर रहे, आप मोबाइल फोन में क्या देख रहे हैं, क्या करें. धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाएंगे, आप जॉब वॉब करने लग जाएंगे, पेरेंट्स का कंट्रोल आपके पास से चला जाएगा. उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, आपकी खुद की फैमिली स्टेबल हो जाएगी, वो उनका कंट्रोल और खत्म हो जाएगा. तो ये क्या हुआ है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. एटॉमिक साइज मतलब आपकी एज बढ़ रही है. जब आप बहुत छोटे हैं, 5 years के, 10 years के, आप बड़े पैम्पर्ड हैं, पेरेंट्स आर कीपिंग एन आई, प्रोबेबली वो आपको स्कूल बस तक छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल तक छोड़ने जा रहे हैं, वो जहां भी आप जा रहे हैं उंगली पकड़ के आपको लेके जा रहे हैं. अब आप थोड़े बड़े हो गए तो बोलते हैं नहीं चलो वहां तक जाना है, आप खुद चले जाओ, आपको मेट्रो में ट्रैवल करना है, आप खुद चले जाओ. सो वो छोड़ रहे हैं ना आपको, धीरे धीरे आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो xenon इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस. नोबल गैसेस को किसी भी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है. पर xenon का क्या हो गया, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया है न्यूक्लियस से कि अब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रह गया. तो अब वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कर सकते हैं. सो कीपिंग दैट इन माइंड, वी वुड से दैट रीजन इज फॉल्स बट assertion is true. Next statement that we have is hydrochloric acid is more acidic than hydrobromic acid. When we talk about acidity, I already told you, we talk about how much feasible is the loss of this hydrogen atom. So HCl में H plus easily lose होगा या HBr में easily lose होगा, तो HCl में ही वो easily lose होगा. And HX bond becomes weaker for HBr in comparison to HCl. That is also correct because chlorine is highly electronegative in comparison to bromine. So if it is highly electronegative, hydrogen becomes highly electropositive. When one is electropositive and another is electronegative, they are forming a dipolar bond or ionic bond. So उनकी जो bond strength है वो भी उस हिसाब से strong हो जाती है in comparison to other species. So that is why assertion is also true, reason is also true, but reason is not explaining the assertion well because acidity का bond strength से relation नहीं है. Next assertion statement that we have is sulfuric acid can be used to prepare hydrochloric acid from chloride salts. That is, हम क्योंकि H2SO4 का process करते हैं, contact process के through हम sulfuric acid को prepare करते हैं. So we understand this. So assertion here is true that yes, sulfuric acid can be prepared, used to prepare hydrochloric acid. Sulfuric acid is less volatile than hydrochloric acid. That is not correct because sulfuric acid is known as king of chemicals. है तो वो acid ही ना, तो हम उस पे volatility की बात नहीं कर सकते, बल्कि hydrochloric acid in comparison to sulfuric acid is less volatile. Sulfuric acid आपकी body में जैसे ही लगेगा तो वो dehydrate करना शुरू कर देगा. तो assertion here is true, but reason here is false. 10th statement that we have is a repetition क्योंकि हमने last वाले उसमें वो कर लिया था. I'm sorry for this repetition. So Ka1 for sulfuric acid is high in comparison. ये already explain कर चुके हैं. इसमें आपका assertion भी true है, reason भी true है, but reason is not the correct explanation of assertion. So that's all from my side for this chapter. हमने P block elements के 2 sessions आपके साथ किए हैं so that you understand it pretty well. For more videos, you can subscribe to the channel. These are the details for the channel, and thank you and have a nice evening.